Okay, my screen is visible to everybody. Yes. Yes. Morning, Yes, ma'am. ma'am. Yes. Good morning, ma'am. Ma'am, वो टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 11 मैम Yes, ma'am. The degree of homogeneity. हाँ, Yes, ma'am. क्वेश्चन इसकी नंबर डिग्री 11 में हाँ डिग्री इसमें गलत दी हुई है। यस मैम ए होगा सिर्फ उसका आंसर। यस मैम Yes, ma'am. Only ठीक है, देख लेंगे उसको क्या मैम है। 8th भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में none of these होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था? क्यूबिक फंक्शन दिया हुआ था मैम क्यूबिक पॉलिनोमियल का मिनिमम वैल्यू निकालने को पूछा था। क्वेश्चन नंबर 8 उसमें क्या प्रॉब्लम थी? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो मैम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। none of these. ठीक है, अब इसको ऐसे तो तुरंत नहीं देख सकते, अब देख के बताएंगे कि मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी कि नहीं। मैम लोकल मिनिमम आ बाउंडेड रही नहीं थी होता है और डिग्री -128। लोकल नहीं लिखा होता ना मैम इसमें। मैम लोकल Minimum- मिनिमम होगा -128। मैम फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। तो जो भी हो, आपका लोकल मिनिमम आ रहा था तो लोकल मिनिमम पे मार्क कर देते। यस मैम हम लोगों ने मैम वही तो किया। नन ऑफ दीज ऑप्शन में दिया था ना। यस और मैम। मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन पूछा था। मिनिमम ग्लोबल मिनिमम। तो मैम अगर लोकल नॉर्मली जब मिनिमम मिनिमा आ या रहा है तो मैक्सिमा देखते हैं लोकल ही निकालते हैं ना। यस मैम। नो मैम, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन में टोटल एब्सोल्यूट मिनिमम निकालते हैं। मैम कोई रेंज भी डिफाइन नहीं की गई थी। No, absolute minimum is derived when the given interval, when an interval is given. Without interval, I think only local minimum. I will check the question and then I'll answer, because like seeing the question and not calculating I cannot answer na. So I'll check the question and then I'll see. बट वो डिग्री वाला तो गड़बड़ था ही। 2-3 दिन देख लेते हैं कि उनकी तरफ से खुद से जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया है उसकी तरफ से खुद से अपने आप से करेक्शन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम खुद ही कर देंगे करेक्शन आप लोग के क्विज में। बट बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए उस क्वेश्चन में 8th में। नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट कुछ नहीं होता है। वो जो सबसे प्रॉमिसिंग वैल्यू होती है उसको फिर ऐसे केसेस में मार्क किया जाता है। ठीक है, improper integrals. Now coming to improper integrals. Now up till now we have calculated the value of the integral. Either the limits are defined a and b, these are the definite limits fx dx, and we have assumed that this function fx ds is मैम वॉइस नहीं आ रही है। I am not audible. Ma'am, you are not audible. I'm not audible. Ma'am, you are I'm not audible, ma'am.
Ma'am, you are not audible. Excuse me, ma'am. मैम Ma'am, you are not audible, ma'am. Ma'am. I think she is also, ma'am is also not getting our voice. ये भी ऐसा चैट किया जाए कॉल करूं मैम को हाँ या कॉल करो कोई call- मैम। सीआर मैम को कॉल करो टीआर कहाँ पे है? पूरा चैप्टर होने को आया Ma'am is not answering the phone. एक साथ मीटिंग से डिस्कनेक्ट होते हैं ना, शायद थोड़ा रिस्पांस मिले। हाँ, सही है, सब लोग डिस्कनेक्ट करो, सही बात है भाई। ठीक है, नहीं, अगर हमको सब हाँ ठीक है, सब लोग सब सही है सही है सबको एक सही है, साथ सब लोग लीव करो भाई। 1 2 सारे 3 के सारे लीव कर 1 2 3 चलो भाई हो जाते हैं। चलने दो भाई हमको नहीं पता चलेगा। अरे मैम को तो पता ही नहीं चल रहा, मैम तो लिखे जा रहे हैं। अरे मैम को थोड़ी पता लगेगा, लीव करेंगे तो मीटिंग। मैम को व्हाट्सएप कर दो, लीव करें टीआर व्हाट्सएप कर दो। व्हाट्सएप का रिस्पांस नहीं कर रही, किसी ने मैसेज किया है B1 वाले पे। भाई लीव कर दो, मैम को पता तो चलेगा ना बच्चे हैं कि नहीं है। भाई नहीं पता चलेगा, मैम तो व्हाइट बोर्ड पे है भाई। मैम थोड़ी देखेंगे कि कितने बच्चे क्लास में है। वो तो अटेंडेंस के टाइम पे देखेंगे। हाँ, वो तो जब मैम अटेंडेंस पे आएंगी तब देखेंगी। मैम हो गया आज तो। मैम लास्ट में वीडियो डाल देगी, देख लेना।
MS टीम से भी कॉल होता है क्या? हाँ होता है भाई। होता है, पर रहने दो भाई, क्यों MS टीम पे क्यों करना। अबे कर दो, और क्या CR कर देगा ना। हाँ CR कर दो, CR मिलाप की। हमको लगेगा। मैम मैम का माइक्रोफोन है ना, वो इशू कर रहा है, तभी तो नहीं आ रही आवाज। अब सुनाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। मिनट हो गए। हेलो। यस मैम, यस नाउ मैम। यू यस आर मैम। यस मैम, यस मैम नाउ ऑडिबल। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम को लगता है अभी भी आवाज नहीं आ रही अपनी। 12 मिनट हो गए। हेलो, अब सुनाई दे रहा है? यस मैम। मैम। यस मैम। इस समय आपकी यस वॉइस मैम। लिखी भी नहीं पड़ी। चैट में लिखो ना, चैट में। मैम को लगता है अपनी आवाज नहीं आ रही। पर हमें तुम लोग की आवाज नहीं सुनाई दे रही है अब। कोई बोलो। यस मैम। यस मैम। मैम। यस यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। यस हेलो। हेलो। हेलो माइक प्लीज। यस मैम। हेलो। हेलो हेलो। हेलो। अरे मैम को बोलो ना, लीव कर रहे मीटिंग और फिर दोबारा ज्वाइन हो शायद मे एनीवन बी। स्पीक नाउ? यस मैम। हेलो। यस यस मैम। मैम। हेलो हेलो। यस मैम। हेलो। उस वजह से साउंड नहीं जा रही वहाँ पे। बोलो एक बार। यस यस मैम। यस मैम। जो मेन स्क्रीन पे भाई वो बोलो, मैम को थोड़ा पता चले। बोल ही रहे हैं भाई। हाँ हेलो शो कर हेलो। रहा है। हेलो तो मैं बोल तो रहा हूँ। हाँ, जो मेन स्क्रीन पे वो बोलो भाई। हेलो। यस मैम। हेलो शो तो हो रहा हेलो है कि कोई बोल रहा हेलो है हेलो माइक। हेलो। मैम को मैसेज कर दो ना कि आप एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन हो, शायद मे भी ठीक हो जाए कुछ उसको भी। नेटवर्क नो प्रॉब्लम। इस मीटिंग को एक बार सभी लीव करके फिर वापस कनेक्ट करते हैं। या उपदेश भाई फोन कम चलाओ यार, बोलो वहाँ पे मैम को कुछ। अरे मैं जब से बोल ही रहा हूँ। फोन चलाते हुए दिख रहे हो बस। नहीं नहीं बोल रहा है भाई ये भी। टीपी में चला रहे हो क्या? अच्छा अच्छा। हाँ। Okay, now I am audible to everybody. यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यू आर। यस मैम। यस मैम।
पता नहीं क्यों तुम लोग की आवाज नहीं आ रही है। मैम आप मीटिंग लीव करके फिर ज्वाइन कर लो एक बार। मैम एक बार मीटिंग लीव करके आप ज्वाइन कर लीजिए। ये आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे चैट बॉक्स में लिख दो। मैम पर मैम चैट बॉक्स। तो इतने सारे हाथ क्यों उठा रहे हो, क्या हुआ? हम लोग का सबका जो है वो माइक्रोफोन म्यूटेड है, तो हमें किसी का आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। यस मैम बोल बोल रहे रहे हैं हैं मैम। मैम आर वी ऑडिबल टू यू ना? कब से? हेलो स्टार्ट द मीटिंग। चलो हमारा आवाज then we सुनाई can- दे रहा है तो ठीक है, हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, फिर अगर नहीं समझ में आएगा तो मैम योर वॉइस इज ऑडिबल। फिर इधर देखेंगे। असल में स्क्रीन अगर उधर स्विच होती है तो फिर हम इधर नहीं देख पाते हैं, दिक्कत ये आती है। और पता नहीं क्यों नहीं आवाज आ रही है। हम एक बार फिर से ज्वाइन करते हैं। यस मैम, दिस इज द पॉइंट। अभी पीपी सर की तरह क्लास हो जाती है हम लोग की। ये कौन यूट्यूब खोल के बैठ गया भाई? हाँ ठीक है ना, अब आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है। आपको हमारी आ रही है? हाँ हाँ, हमें भी आ रही है सबकी। ओके मैम। ओके मैम प्लीज शो फ्रॉम द सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स अगेन। हाँ दिखा रहे हैं। फर्स्ट टाइप also। फर्स्ट काइंड समझ में आ गया था ना, तब तक आवाज आई थी ना समझ में नो नहीं मैम आई। नो मैम नहीं आई। नो मैम यू आर नॉट ऑडिबल। नहीं आया। नहीं आ रही है। चलो ठीक कुछ है, नहीं फिर से एक बार बोले दे रहे हैं। चलो in case of first kind of improper integral, what is the if the limit, either the upper limit is equal to infinity or the lower limit is equal to minus infinity, then we say that the improper integral is of first kind. And in such case we have used this definition in questions previously also, that either the upper limit is equal to infinity, then we place t and take the limit as t tends to infinity in the upper limit. ठीक, and we can write it is equal to as epsilon tends to 0 and this is equal to 1 upon epsilon then also. And when the lower limit is equal to infinity, similarly we can write this definition. Now the second kind is that the limits are given but the function is not defined either at the lower limit or at the upper limit. So when it is not defined at the lower limit, that is either is equal to plus infinity or minus infinity, then we define the integral in this form. Okay, we are taking t plus a because we cannot go in the left hand side of a. It is the function, the limit, the integral limit is from a to b. So we have to be within a to b. So this is t plus a, and as t tends to infinity. Now the function is not defined at a, but the function is defined at t plus a. So we can calculate this integral and then we take the limit as t tends to 0. Now the second is if the function is not defined at the upper limit. Now if the function is not defined at the upper limit, then in such case, what we do, we take the limit as from a to b minus t. Now here it is b minus t because we cannot go beyond b. You have to be within a to b. And then we take the limit. After calculating the integral, we take the limit as t tends to 0. Now if the limit of these integrals exist, then we say that the integral is convergent. Otherwise, we say that the integral is divergent. Now this is clear to everybody. Now coming to question.
Now you have to calculate this integral, where a is a positive number, real number. अपना सब लोग माइक्रोफोन म्यूट कर दो जब तक कि क्वेश्चन ना पूछना हो, बिकॉज फिर डिस्टरबेंस होता है क्लास में. सर बिल्कुल. Okay, so we have to calculate this integral. So this will be by our formula. This will be epsilon tends to 0, a to 1 upon epsilon dx upon x to the power of n. Now you calculate this integral and put the limit. So this will be x to the power of 1 minus n upon 1 minus n from a to 1 minus 1 by epsilon, and then we take the limit as epsilon tends to 0. So this is equal to 1 upon 1 minus n बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, और अंदर हमारे पास बचा 1 अपॉन एप्सिलॉन की पावर 1 माइनस n माइनस a की पावर 1 माइनस n. Now the limit of this depends upon the value of n. So this is equal to a upon 1 minus n upon n minus 1 when n is greater than 1. And this is equal to infinity when n is less than 1. Now what about at n equal to 1? At n equal to 1, this is a to infinity dx upon x. N is equal to 1. So again you calculate the limit. This is equal to limit epsilon tends to 0, a to 1 upon epsilon dx upon x. So this is limit epsilon tends to 0 log x a to 1 upon epsilon. So this is equal to limit epsilon tends to 0 log of 1 upon epsilon minus log of a. Now you take the limit as epsilon tends to 0, then log of 1 upon epsilon will be infinity. So this is whole infinity. That is at n is equal to 1, the integral is convergent. At n less than equal to 1, the integral is divergent. Check. So that is this integral is equal to a this means convergent, and this is equal to infinity as this means divergent. Clear everybody? कैसे निकला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now next एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. मैम तो फिर मैम n इक्वल टू 1 के केस में यहाँ पे log 1 बाई एप्सिलॉन है मैम, हम इसे ओपन तो कर सकते हैं लाइक log 1 माइनस log एप्सिलॉन, देन इन्फिनिटी शायद नहीं आएगा क्या? लाइक ln 1 माइनस ln एप्सिलॉन कर दे मैम, लाइक ln m बाई n के फॉर्मूले से अलग कर दे इसे. चाहे जैसे ले लो, जब लिमिट रखोगे तो आ जाएगा वो. 1 अपॉन एप्सिलॉन को एक्सपेंड करोगे ना? यस मैम. हाँ, चाहे एक्सपेंड करके देख लो, तब भी जब लिमिट रखोगे तो भी वो इन्फिनिटी ही आएगी एज एप्सिलॉन टेंड्स टू 0.
Okay, ma'am. चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक. So this is improper integral of first kind. Of first kind. तो first kind वाले फॉर्मूले से हमें इसे सॉल्व करना है. So first of all we have to, oh no, we have the formula for either the limit is minus infinity or plus infinity, but here both are given. So first of all we will break it into two parts to apply our formula. So we can break it at 0 or any other value you want to break. Take. Now we can apply our formula. So this is limit t tends to minus infinity t to 0 dx upon 1 plus x square and plus limit t tends to infinity 0 to t dx upon 1 plus x square. Now you calculate this. This is equal to minus t tends to minus infinity and this is tan inverse t. Limit हमने रख दी है t to 0, therefore minus is coming, and this is plus limit t tends to infinity tan inverse t. 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा. Now you put the limit as t tends to minus infinity, तो क्या आएगा ये? This is minus pi by 2 plus, and t as t tends to infinity tan inverse t is pi by 2. So this is pi. Clear everybody? Ma'am, in the range of tan inverse function, pi by 2 and minus pi by 2 are not included only. So is it accurate to include that? We are taking the limit. Limit ले रहे हैं ना? Yes, ma'am. But tan inverse range, it is minus pi by 2 to pi by 2 open on both sides. तो हम कहाँ उस पॉइंट पे ले रहे हैं? उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कहाँ ले रहे हैं? लिमिट ले रहे हैं ना. लिमिट लेना और उस फंक्शन पे पॉइंट की वैल्यू लेना दोनों अलग चीजें हैं. उस पॉइंट पे वैल्यू थोड़ी ले रहे हो. Okay, ma'am. Okay. Now third question is minus infinity to 0 e raised to the power of x dx. You have to calculate this. Now this is limit x tends to minus infinity x to 0 e raised to the power of x dx. ठीक भाई आवर. Now this is again of first kind. So this is equal to, now you calculate this integral limit x tends to minus infinity. This will be 1 minus e raised to the power of x. Now this, as x tends to minus infinity, e raised to the power of x tends to 0. So this is 1 minus 0. 1.
Now one more question. 1 to infinity dx upon under root of x. So this is limit t tends to infinity 1 to t dx upon under root of x. Check again, this is of first kind. So we are applying the formula for first kind. This is first kind. Ma'am, Hmm. in our solutions, is it not always necessary to show epsilon, or can we just leave it like t only? It depends upon you. Sometimes it is easy to, it depends upon the value of the limit. Sometimes it is easy to calculate the limit as t tends to infinity, then we use this formula. And sometimes it is easy to calculate the limit as t tends to 0, then we use 1 upon t formula. Okay, ma'am. Then we will use whichever is more convenient. Whichever is more convenient. You can use both the formula. Okay, ma'am. So this will be limit t tends to infinity 2 by 3 t to the power of 2 by 3 minus 1. Now as you take the limit as t tends to infinity, this value becomes infinity. So this integral does not exist. This is divergent. Now another example. This is 1 to 0 to 1 dx upon under root of 1 minus x. Now both the limits are given, but the function is not defined at x is equal to 1. That is the upper limit. So this is second kind. So now you use the second kind formula. So this is limit epsilon tends to 0, 0 to 1 minus epsilon dx upon 1 minus x. Why? Because function is not defined at x is equal to 1. When you put x is equal to 1, the function comes to be infinity. So now you calculate the integral and put the limit as epsilon tends to 0. So this will be minus 2 under root of 1 minus x limits 0 to 1 minus epsilon. So this is minus 2 under root epsilon plus 2 when you put the limit. So as epsilon tends to 0, this limit is equal to 2. Clear, everybody? Yes, sir. और क्वेश्चन देख लेते हैं. Ma'am, scroll little bit up. Next question is from 2 to 4 dx upon x minus 2 की power 2 by 3. Now this is again of second kind. The limits are given, but the function is not defined at. Function is not defined at the lower limit.
सो लोअर लिमिट है तो देयरफॉर हमें क्या करना है 2 प्लस एप्सिलॉन. दिस इज लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, 2 प्लस एप्सिलॉन 4 dx upon x minus 2 की power 2/3. Now first you calculate the integral and then you put the limit. So this is equal to limit epsilon tends to 0. अब इसका करो क्या आएगा x minus 2 की पावर -2/3 plus 1 upon -2/3 plus 1. And when you put the limit, it is 2 plus epsilon to 4. So रखो और लिमिट निकालो क्या आएगी जल्दी से बताओ. मैम 3 into 2 to the power 1/3 into 2 to the power 1/3. सबका आ गया ना. Yes ma'am. 3 Yes ma'am. into 2 की पावर Yes ma'am. 1/3. 1/3. मैम हम लोग एप्सिलॉन अपर और लोअर लिमिट दोनों में डाल सकते हैं. हाँ जिस पॉइंट पे फंक्शन नहीं डिफाइंड होगा तब. यहाँ पे क्या था यहाँ पे लोअर लिमिट पे फंक्शन नहीं डिफाइंड है तो देयरफॉर 2 प्लस एप्सिलॉन रखा है. उसके ऊपर वाले क्वेश्चन में अपर लिमिट पे फंक्शन नहीं डिफाइंड था 1 पे नहीं डिफाइंड था तो हम 1 माइनस एप्सिलॉन करेंगे बिकॉज वी कैन नॉट गो बियॉन्ड द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट. अपर लिमिट के ऊपर नहीं जा सकते देयरफॉर 1 माइनस एप्सिलॉन एंड लोअर लिमिट के नीचे नहीं जा सकते तो देयरफॉर 2 प्लस एप्सिलॉन. ओके मैम. मैम मैम अगर क्वेश्चन में रहेगा कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स तो इसमें क्या दोनों टाइप यूज हो जाएगा. हाँ तो इस तरह का हमने कराया तो है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. इसके पहले नहीं आया था ये. हाँ इसमें अगर 1 प्लस एक्स रह जाएगा मैम तब तो ये मतलब -1 पे नहीं होगा तो मतलब इसको दोनों टाइप से सॉल्व करना होगा. नहीं अगर कोई भी एक लिमिट 0 पे दी हुई है तो आपको फिर उसको और पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा. अगर कोई भी एक लिमिट इन्फिनिटी आ गई या माइनस इन्फिनिटी आ गई तो वो तो फर्स्ट काइंड हो गया. अब इसमें अगर मान लो कोई एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जिसमें कि फंक्शन नहीं भी डिफाइंड है तो उसको फिर तोड़ोगे. ओके मैम ठीक. Now again this is -1 to 1 dx upon x to the power of 2/3. Now function -1 पे भी डिफाइंड है 1 पे भी डिफाइंड है but the function is not defined at x is equal to 0 which lies between -1 to 1. ठीक. So first of all we'll break the function, break the integral in this form. So this will be equal to -1 to 0 dx upon x to the power of 2/3 plus 0 to 1 dx upon x to the power of 2/3. So both these are improper integral of second kind. The functions are not defined at x is equal to 0. Here the limit is the upper limit and here the limit is the lower limit. So the formula will change. Here we will take epsilon tends to 0 -1 to 0 minus epsilon dx upon x to the power of 2/3 plus limit epsilon tends to 0 plus epsilon to 1 dx upon x to the power of 2/3. अब कैलकुलेट करो जल्दी से. पहले इंटीग्रेट करो फिर लिमिट निकालो.
So limit epsilon tends to 0. This will be 3x to the power of 1 by 3 और लिमिट रखेंगे -1 से माइनस एप्सिलॉन प्लस लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 and this is 3x to the power of 1 by 3 and लिमिट रखेंगे एप्सिलॉन से 1. ठीक आ गया 6 सबका? यस मैम. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे 3 आएगी, यहाँ पे 3 आएगी, so 3 plus 3 this is equal to 6. Now coming to gamma function. We have used gamma function in the questions. Now what is gamma function? Now we are going to define it. Gamma function is defined as gamma alpha. This is equal to 0 to infinity x to the power of alpha minus 1 e raised to the power of minus x dx, where alpha is positive. So this is an improper integral. Now we will discuss the convergence of this gamma function. So again, we'll break it into two parts. 0 to c x to the power of alpha minus 1 e raised to the power of minus x dx plus c to infinity x to the power of alpha minus 1 e raised to the power of minus x dx. Take where c lies between 0 to infinity. C is any function of this kind. Now this is very clear that this is improper integral of first kind. Now what about this? Now this I am saying that this is improper integral of second kind. Now, why this is of second kind? Because at x is equal to 0, now this alpha is lying between 0 to 1. So what will be the limit? x is equal to 0 पे इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? अंदर वाले की अल्फा 0 से 1 के बीच में है. Infinity. Yes, ma'am. Then it will be undefined. 1 by infinity. नहीं defined होगी. So this is improper integral of second kind at when alpha lies between 0 to 1. ठीक? And when alpha is greater than equal to 1, this is a proper integral. Then all the limits exist. ठीक? And for alpha greater than equal to 1, it is proper integral. Okay. So we have to discuss two cases when alpha lies between 0 to 1. Then what will be the nature of this integral, whether it will be convergent or divergent, and the nature of this second integral from c to infinity and x to the power of alpha minus 1 e raised to the power of minus x dx. So if these two types of these two integrals are also convergent, then we will say that the gamma function is always convergent. Okay. Otherwise,
So now let us name this integrals. Now suppose this is I1 and this is I2. Take this integral is I1 and this is I2. So we have to first discuss the case for I1 at x is equal to 0 and alpha lies between 0 to 1. Now let fx is equal to x to the power of alpha minus 1 e raised to the power of minus x and gx is equal to x to the power of alpha minus 1. Now 0 is the lower limit, so we cannot go behind 0. We will always calculate the limit 0 plus right hand limit, not the left hand limit. So limit x tends to 0 plus fx upon gx. ये क्या होगी? This is limit x tends to 0 plus e raised to the power of minus x. This is 1. ठीक है? Now since 0 to c gx dx, this is equal to 0 to c gx upon x की power 1 minus alpha. This is convergent for 1 minus alpha less than 1. अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन यही वाला किया था ना, x to the power of alpha कन्वर्जेंट होगा जब अल्फा लेस देन 1 होगा. ठीक, तो यहाँ पे हमारे अल्फा की जगह 1 माइनस अल्फा है, सो दिस इज 1 माइनस अल्फा लेस देन 1. ठीक, so therefore by comparison test of integrals I1 is also convergent for alpha greater than 0. यहाँ से क्या मिलेगा? ठीक, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है नॉट इक्वल टू 0, सो बोथ विल हैव द सेम नेचर and both the integrals will have the same nature. Now since gx is convergent, therefore fx will also be convergent. Integral of fx is also convergent. And what is integral of fx? This is the value of the integral I1. Okay. Now for I2. I2 के लिए नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं, बिकॉज क्लास का टाइम एंड हो रहा है और उसमें टाइम लगेगा. ठीक, हम लोग नेक्स्ट टाइम पे देख लेंगे I2. यस मैम. Yes, मैम. यस मैम. Opening of college. thank you, ma'am. You all can leave now. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.